So basically, in example 9, you are given cross-sectional areas. So when you are given in the first column as cross-sectional areas as ordinates, when you apply Simpson's multipliers to them, then the first thing that you will get is the volume. That's what we wrote, volume function. We wrote that when we started volume. Given ordinates as WPA or CSA, we apply Simpson's rule in the same manner and we get volume. Yes, sir. Now, इस वॉल्यूम को जब मैं लीवर लगाऊंगा इन द सेम मैनर, तो मुझे मिलेगा फर्स्ट मोमेंट ऑफ वॉल्यूम फंक्शन. नाउ माय डी by formula for 2D diagram is total first moment of area divided by total area for the 2D diagram. But this is a 3D diagram. So for a 3D, it will become total first moment of volume function, that is divided by total volume. This is meter cube, this is meter square, this is meter 4, this is meter cube. So this in a 2D diagram, you will get LCF if you're measuring it from aft. So basically you're getting center of rotation and then you're measuring it from wherever. In this diagram, you'll be getting center of buoyancy. And then if you're measuring it from aft perpendicular, then you'll get LCB. And if you're measuring it from keel, you'll get KB. That's how it happens. ये 2D डायग्राम का है, ये 3D डायग्राम में है. Okay, sir. Is that okay? Yes, sir. So that's example 9 for you. Any other doubt? Any other doubt? Okay. Coming on to question number 2. Same exercise. Question number 2. The breadth of a transverse watertight bulkhead. The breadth of a transverse watertight bulkhead at 2-meter interval from bottom. H is 2 meters from bottom are as follows. So एक टेबल बनाते हैं पहले तो. Title of the first column identical to whatever is given in the question. So ordinates are given to you. Breadths from bottom in meters. These are the ordinates. 2, 5.8, 8.4, 10.2, and 11.4. Ordinates, breadths from bottom.
Title of the second column. Simpson multiplier. कौन सा रूल लगाना चाहोगे? Sir, 1. Rule 1. 1. Okay. 1, 4, 2, 4, 1. Title of the third column. Title of the third column. Semi area function. फिर से पढ़ो. Sir, product for CSL. Area, sir. Area function. Area function. Semi area नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? Sir, because semi breadth नहीं है. Because Half breadth नहीं है. Yes. full breadth है ये. Half breadth नहीं है. These are full breadths. Full breadths will give area. Semi breadths or half breadths will give semi area. So multiply किया. And we obtain SOP1. $94.2. सबका सेम आ रहा है. Yes, sir. Okay. Alright. अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा पहले. Before I move ahead on this side, I'll draw the diagram now. The breadths of a transverse watertight bulkheads at 2-meter interval from bottom. So bulkhead है. So bulkhead का कुछ एक टॉप होगा और bulkhead का एक कुछ हाइट होगी और bulkhead का कुछ बॉटम होगा. ठीक है. This is a bulkhead is always a T. Please remember, a bulkhead is like a T. So और ब्रेथ दी हुई है यानी कि पोर्ट टू स्टारबोर्ड दोनों है. हाफ ब्रेथ होती तो खाली एल होता, या इधर होता या इधर होता. सो द ब्रेथ्स एट 2-meter इंटरवल. अब नीचे से दिया हुआ है तो नीचे मैं कील बना देता हूं पहले. फ्रॉम बॉटम इज 2. सो नीचे वाला 0 नहीं है, 2 है, तो ये 2 हो गया. पोर्ट टू स्टारबोर्ड ब्रेथ. फिर 5.8 है, ये 5.8 हो गई पोर्ट टू स्टारबोर्ड. फिर 8.4 है, फिर 10.2 है, एंड फाइनली 11.4 है. अब इसको ज्वाइन कर दो. ये हमारा कंप्लीट बल्कहेड बन गया जिसका हमें एरिया ढूंढना है. फिर कहता है क्वेश्चन, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द ज्योमेट्रिक सेंटर फ्रॉम टॉप. तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर यहां कहीं लाई करेगा किसी एक जगह पे. तो ये जगह ले ली मैंने, ये इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है. क्वेश्चन कहता है मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, इसको मैं D1 का नाम दे रहा हूं. और फिर
क्वेश्चन कहता है द थ्रस्ट when it is pressed up with salt water to a head of 6 meters above the top. हेड ऑफ 6 meters का क्या मतलब है? ये साउंडिंग पाइप है, ये साउंडिंग पाइप है, ये वाटर लाइन है और ये 6 मीटर है. दिस इज द हेड ऑफ द साउंडिंग पाइप. As per our definition, distance of GC to the water line is known as depth, which is nothing but D. ये हमारी definition है. Distance of GC to the water line is known as depth, D. This is the tank top, TT. This is the keel. ओके, क्वेश्चन मुझे कहता है और ये H है, ये H इंटरवल है which is 2 meters. So is the diagram understood by everybody? Is the diagram understood by everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ओके, अब क्वेश्चन मुझे कहता है फाइंड आउट द एरिया सबसे पहले, फिर कहता है फाइंड आउट द जीसी फ्रॉम द टॉप, यानी कि D1 चाहिए और फिर थ्रस्ट चाहिए. तो क्वेश्चन ये मेरा आ जाता है, मैं लीवर कहां पे लगाऊं, अबाउट व्हाट एक्सिस, लीवर अबाउट व्हाट. सिंस मुझे D1 चाहिए तो मैं लीवर विल बी अबाउट TT. एग्रीड और नो? सिंस मुझे D1 चाहिए तो मैं लीवर भी वहीं से लगाऊंगा जो मुझे फाइनली डी आंसर मिल जाए, D1. Yes, sir. सो मैं लीवर अबाउट TT लगा रहा हूं, अबाउट द टैंक टॉप. सो जब मैं यहां से लगा रहा हूं, लीवर ऑफ 11.4 अबाउट TT will be how much? 0. So lever of 11.4 about TT will be 0. Lever of 10.2 about TT will be how much? 1H. 1H or 2 meters. एक ही बात है. Similarly, 8.4 2H 3H. ये लीवर समझ आए कि नहीं? Lever. Sir, this water line is irrespective of the draft, right? वो जो जिसे हमने press up किया 6 meter. वाटर लाइन इज irrespective of the draft. ड्राफ्ट कहाँ पे बाहर है वो मुझे कोई मतलब नहीं है. ये बल्कहेड है, ये बेसिकली टैंक है. दिस इज अ टैंक. ये टैंक है. दिस इज अ टैंक. ये उस टैंक का बल्कहेड है.
Are the levers okay with everybody? Yes, sir. Okay. So area into lever will give me what? First moment of area function. And this will be first moment of area about what? About TT. क्योंकि lever is about TT. तो इनको मल्टीप्लाई किया. Tell me the value of SOP2. (152H). सबका सेम आ रहा है. Yes, sir. Okay, great. Sir, 152. हाँ जी. Same as Okay. So now we find out area. Area will be h by 3 into SOP1, 2 by 3 into 94.2. कितना आता है? 62.8 meters. 62.8 meter square. Is this okay with everybody? yes, sir. Okay. Let's now find out first moment of area. First moment of area will be h by 3 into SOP2 is 2 by 3 into 152H और H को अब मैं रिप्लेस कर रहा हूं 202.667. 202 एंड इसका यूनिट होगा n क्यूब. Okay. So D1 will be how much? Total first moment of area divided by total area. And that will be equal to 202.667 meter cube divided by 62.8 meter square. कितना आता है? 3.22. 3.227. 3.227 या 228? Mid 227. Yes, sir. 7, sir. 3.227 meters. And this will be the distance from GC to the tank top. Now D will be equal to D1 plus 6. The depth will be equal to
9.227. Is that okay? So therefore, can you find out the thrust? Depth into density into area. So how much is the thrust? 9.227 into 1.025 into 62.8. Five nine 3.94. 593.94 units of thrust are tons. So many tons. हाँ जी, any doubts? सर इसमें स्टार्टिंग में ही अगर यूं कहता कि डिस्टेंस ऑफ जीसी फ्रॉम बॉटम तो फिर मैं लीवर अबाउट bottom. रिवर्स करते हैं. Lever about bottom. Yes. Title of my fourth column would have been lever about bottom. So 2 के आगे में 0h, 1h, 2h, 3h, 4h. Okay, sir. Is that okay? Is that okay? Basically, Yes, sir. title of the fourth column should be the same as जो चीज ढूंढनी है क्वेश्चन में. So धीरे धीरे हम सारे टाइटल्स को फ्रीज कर रहे हैं ताकि so title first title same as that given in the question. Second आपको पता है सिम्पसन मल्टीप्लायर. थर्ड एरिया फंक्शन पता है. फोर्थ अगेन सेम लीवर एज दैट गिवन इन द क्वेश्चन. जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वहीं से लीवर लगा दो. तो हर चीज को फ्रीज करते जा रहे हैं. ठीक है. इज दैट ओके? Okay. ओके. नाउ सेम क्वेश्चन में मैं वेरिएशंस डाल रहा हूं. सो राइट डाउन अ क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन, सेम डेटा. सेम क्वेश्चन, सेम डेटा. Calculate the thrust in the following cases. Number 1. When the tank is filled up to a sounding of 8 meters. Second, to a head of 2 meters. Third,
to sounding of 30 meters. So calculate the thrust in each of the following cases. हाँ जी, फर्स्ट केस में थ्रस्ट कितनी आती है? सर 207.722. सेकेंड में 336.46. ओके एंड थर्ड केस में 1623.862. 1623.862. So basically what we are saying is जब सराउंडिंग 8 मीटर है तो उस वक्त हेड 0 है, उस वक्त डेप्थ जो है
वो D1 ही होगी, विच इज 3.227। उस वक्त थ्रस्ट 207 टन की है। जब हम साउंडिंग पाइप में, जो कि बड़ी मिनिस्क्यूल क्वांटिटी है, 2 मीटर एक हेड डालते हैं, तो इतनी छोटी क्वांटिटी हम पानी का डाल रहे हैं, लेकिन हमारे थ्रस्ट 1.5 गुना ज्यादा ऑलमोस्ट बन रहा है। और जब हम टैंक को ओवरफ्लो कर रहे हैं, और यानी कि हम साउंडिंग पाइप में 22 मीटर का हेड दे रहे हैं, अगेन क्वांटिटी बहुत कम है, तो थ्रस्ट हमारा ऑलमोस्ट 8.5 गुना बन रहा है, 9 गुना, 10 गुना ऐसे बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम टैंक को ओवरफ्लो करते हैं, उस वक्त the thrust on the bulkhead multiplies itself so many times. So, as a prudent mate, we should not overflow a tank. We should, जब हम बैलेस्टिंग करते हैं, तो as a prudent mate, what should we do? Generally, हम sea chest खोल देते हैं, and we allow the water to come in by gravity into the DB tank. So, अगर 1-1.5 मीटर तक ग्रेविटी से आ जाता है, और supposing my DB is 2 meters, then the balance amount, I run the ballast pumps for a very short while and let the water come up to a sounding of about 2.1, 2.2, and then stop. And then finally it will settle at 2 meters. जितना मैं 2 मीटर के पास रखूंगा, उतना थ्रस्ट कम होगा बल्कहेड पे, and therefore I will be prolonging the life of the vessel. और जितना मैं ऊपर हम करते ओवरफ्लो कर दिया और साउंडिंग पाइप में रखा, उतना मैं लाइफ ऑफ द वेसल को मैं डिटीरियरेट कर रहा हूं, मैं कमती कर रहा हूं, क्योंकि मैं इतना थ्रस्ट बल्कहेड के ऊपर में और डाल रहा हूं अननेसेसरी। सो जब हम बैलेस्ट वाटर एक्सचेंज करते हैं, और ये 3 दिन का ऑपरेशन होता है हमारा, तो बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट हमें ओवरफ्लो करना है, so that is okay. For those 3 days you do it, but after you have ballasted and overflowed, then उसके बाद में deballast भी तो करो and bring the water down so that there is no head. Idea is there should be no head. You should have only that much of ballast that is there up to the tank top. That's it. Head नहीं होना चाहिए. That is what a prudent mate would do. ठीक है? Is that okay? Yes. Okay. All right. So, question number 3. इसका डायग्राम बना देता हूं मैं, so that the half breadths of a transverse watertight bulkhead at 2 meter vertical interval from top are given. हाफ ब्रेथ दी हुई है, so L बनेगा क्योंकि हाफ ब्रेथ है. 2 मीटर वर्टिकल इंटरवल फ्रॉम टॉप, सो ऊपर वाला 10.6 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 9.3 है, उसके बाद 8.3 है, उसके बाद 7.1 है, उसके बाद 5.7 है, उसके बाद 3.8 है. ये हमारे
हाफ बल्कहेड हो गए. Below the semi-ordinate is a rectangular appendage. Appendage मतलब एक piece, a welded piece. So is a rectangular appendage. So rectangle है 7.6 broad. तो 3.8 इधर जा रहा है, 3.8 इधर है, ये 7.6 हो गया. ये एक रेक्टेंगुलर पीस है जो कि नीचे में वेल्ड किया गया है और ये 1 मीटर हाई है. सो ये एक पीस है, ये एक पीस है. दिस इज A1, दिस इज A2 और ये इसका कील हो गया. ये हमारा रेस्ट ऑफ द बल्कहेड हो गया. ये हमारा रेस्ट ऑफ द बल्कहेड हो गया. वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल एरिया and the distance of the GC from the bottom of the appendage. The distance of the GC of the complete shape. So let this be the GC of the complete shape. मुझे ये distance from the bottom of appendage से निकालना है, कील से निकालना है. ये डिस्टेंस निकालना है मुझे. ये मेरा D है जो मुझे ढूंढना है. सो ये मेरी A1 एरिया है, ये मेरा A2 एरिया है. ये ऑफ कोर्स सेमी एरिया है, उसको ट्वाइस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा. सिम्पसन मल्टीप्लायर उसी ऑर्डर में लगाऊंगा जिस ऑर्डर में मुझे दिए गए हैं. 3, 3, 6, 7. कौन सा रूल लगाना चाहोगे? रूल 1. रूल 1. ओके. सो सिम्पसन मल्टीप्लायर बनेंगे 1, 4, 2, 4, 2, 4, 1. ये हमें SOP 1 देगा, ये हमें SOP 1 देगा. उसके बाद हमें नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा लीवर. लीवर कहां से लगाना चाहोगे? बॉटम से सर. बॉटम से. कौन से बॉटम से? बॉटम से सर, अपेंडेज के बॉटम से. सो H+1 से करते हैं. So lever will be from keel. Lever will be from keel. So 3.8 का lever from keel will be 1 meter. Agreed? Yes sir. H in this question is 2 meters. So 5.7 का lever from keel will be 1 plus 2, that is 3 meters. So इसमें H में नहीं लूंगा मैं, इसमें it will be in meters only. ये 3 समझ आ गया कैसे आया? ये H है, H is 2. So 1 plus 2. Is that okay with everybody? Yes sir. 7.1 का लीवर क्या होगा? 5, 7, 9, 11 and 13. ये मुझे देगा SOP 2. ये मुझे देगा SOP 2, यानी कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ सेमी एरिया ऑफ A1. उसको ट्वाइस कर दूंगा तो मुझे फर्स्ट मोमेंट ऑफ A1 मिल जाएगा.
first moment of A1 will be twice into H by 3 into SOP2. Area A1 will be twice into H by 3 of SOP1. तो ये तो मेरा ऊपर का इस पार्ट का हो गया. अब मैं रेक्टेंगल पे आता हूं, अपेंडेज पे. एरिया ऑफ द appendage will be 7.6 into 1. It's a rectangle. Agreed? This is the area. This is the area of the appendage. First moment of area of appendage about keel will be area of the appendage into lever from keel. Area of the appendage is 7.6 meter square. इस रेक्टेंगल का ज्योमेट्रिक सेंटर कहां पे होगा? सेंटर में. इसके सेंटर में होगा. इसका लीवर कितना होगा? 0.5. सो इसका लीवर बना 0.5. ये बन गया 3.8 मीटर क्यूब. यहां तक समझ आ गया क्या करा मैंने? Is this okay with everybody? So therefore, D is total first moment of area of A1 plus A2 divided by total area A1 plus A2. Total first moment of area ये वाला twice into H by 3 into SOP2. ये तो ऊपर वाला हो गया. Plus first moment of area of appendage 3.8 divided by total first area A1 twice H by 3 SOP1 plus A2 का एरिया 7.6. ये आपको डायरेक्टली डी देता है जो आपको चाहिए, और एरिया टोटल आप निकाल लोगे, वो आपको पता है. A1 plus A2. Is this question okay? हाँ जी. Is this okay with everybody? Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now what I want you to do is, I want you to do question number 4 and question number 5.
as homework. Question number 4 and question number 5 of the same exercise. Question number 4, question number 5, and example 10. And example 10. Question number 4, question number 5, and example 10. Please do that as homework. All right? Okay. Okay. Chalo. See you then. Bye. Thank you, sir. वो रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मैं भिजवा रहा हूँ चार्ट वर्क वाली जो आपको चाहिए.